सोलापुरातील कुंभारी स्थित श्री लक्ष्मीनारायण देवालय येथे परमपूज्य सद्गुरू ब्रह्मलीन श्री स्वामी निरंजन शिवयोगी यांची 60वी पुण्याराधना भक्तिमयरित्या संपन्न झाला। मंगळवार दिनांक 27 मे 2025 रोजी कुंभारी स्थित यत्नाळ रोडवरील श्री लक्ष्मीनारायण देवालय येथे सालाबादप्रमाणे याही वर्षी श्री नरसिंहानंद बहुउद्देशीय सांस्कृतिक मंडळ आयोजित परमपूज्य सद्गुरू ब्रह्मलीन श्रीमद स्वामी निरंजन शिवयोगी यांच्या 60व्या पुण्याराधनानिमित्त मंगळवारी सकाळपासूनच देवालयात विविध धार्मिक विधी पार पडले। यात पहाटे काकड आरती, मेलकोलपोळू व प्रभात फेरीने कार्यक्रमास सुरुवात झाली। पहाटे 5 ते 6 या वेळेत श्री सद्गुरू निरंजन स्वामींच्या मंगल प्रतिमेवर पुष्पवृष्टी करण्यात आली। सकाळी 7 वाजता श्रीमद भगवद्गीता व विष्णू सहस्त्रनाम पारायण संपन्न झाले। त्यानंतर श्री सद्गुरू निरंजन स्वामीजींच्या प्रतिमेची पालखीसह मंदिरभोवती दिंडी मिरवणूक काढण्यात आली। सकाळी 11 वाजता हरिभक्त पारायण श्री नरसिंहानंद गज्जल महाराज, श्री अंजनेलू दुस्सा महाराज व हरिभक्त पारायण श्री पांडुरंग दासरी महाराज यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुमहिमा यावर सत्संग संपन्न झाले। दुपारी 1 वाजता गुलाल उधळून श्रीस आरती करण्यात आले। त्यानंतर आलेल्या सर्व भाविकांनी महाप्रसादाचा आस्वाद घेतला। दुपारी 4 वाजता निष्काम भजनी मंडळ व श्री कल्याणम व्यंकटदास भजनी मंडळाकडून भजन कार्यक्रम पार पडले। त्यानंतर श्री ज्ञानेश्वर हरिपाठ संपन्न झाले। संध्याकाळी 6 वाजता पूज्य गुरुदेव श्री श्रीनिवासजी काटकर महाराज यांचे भक्तिमय प्रवचन संपन्न झाले। रात्री 8 वाजता कुंभारी येथील श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर भजन मंडळाच्या वतीनं भजन संध्या संपन्न झाले। या संपूर्ण कार्यक्रमात मंदिर समिती विश्वस्त श्री रामकृष्ण गुन्नाल, गोविंद तुम्मा, व्यंकटेश रत्सासर, मल्लिकार्जुन पासकंटी, व्यंकटेश श्रीगादी, अंजनेया दुस्सा महाराज, यादगिरी तोडंगल आदी उपस्थित होते। సాధు రక్షక సాధులను కాపాడిను శంకు చక్ర గద ఆస్త ప్రహ్లాద పాపదంస ప్రహ్లాదుని కాపాడిను చిరసాయి సాగర ఎక్కడున్నాడు పాల సముద్రంలో ఉన్నాడు చిరసాయి సాగర కృష్ణవర్ణ ఎట్టున్నాడు ఆ మబ్బెట్టినట్ల నీలవర్ణం ఉన్నాడు కృష్ణవర్ణ అతని వాహనమే పక్షి వాహన నీల భ్రమర కుంతలయ్యాల అతని ఎంటికలు ఎట్టునే ఎరుకున్నారా తుమ్మెదలు ఉన్నాడు గుండ్రగా ఎట్టున్నాయి తుమ్మెదలు ఎక్కున్నాయి ఆ భగవంతుని ఏమి కుంత కుటుంబాలదంతా పల్లెట్టున్నాయి మల్లె మొగ్గలు ఎక్కున్నాయి ఏమన్నాడు ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు ఎట్లా ఉన్నాడు మనకు తెలియాలంటే ఇలా మొత్తం వర్ణ చేసి చెప్పింది శ్రీ మనోహర సురారి సిద్ధ ఓం నమో అనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షి శిరోరుబావే सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वती सहस्रकोटिवधारिणे नमः सहस्रकोटिवधारिणे नमः। आप परमेश्वर की नमस्कार ఈశ్వర గురురాత్మేతి ఈశ్వరుడు శ్రీ గురుదేవుడు ఆత్మ తాను 3 ఒకటే అని చెప్పిండున్నది। ఆకాశం లెక్క వ్యాప్తమైన దక్షిణామూర్తికి నమస్కారం కానీ కాబట్టి
दुर्लभ विष्णू मंदिर आहे. तुम्ही शंकराचं मंदिरही पाहत असणार. बघा बरं, उन्हाळ्यामध्ये तिथे शंकराच्या पिंडीवर अशी एक गळती लावलेली असते, पाणी असतं त्याच्यामध्ये, थेंब 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 ते पाणी त्या शिवपिंडीवर पडत असते. काय अर्थ आहे या सगळ्याचा? त्याचा अर्थ असा आहे की ते पाणी म्हणजे काय आहे? आयुष्य आहे. आयुष्य लक्षात घ्या. आणि ते लिमिटेड आहे. ओके, एक हजार खाली एक त्याला भोग असतो, त्याच्यामध्ये पाणी भरलेलं. तुमचं आमचं आयुष्य म्हणजे त्या घागरीच आहे. आणि त्यामध्ये लिमिटेड काय आहे? क्षण आहे, जास्त नाही आहे, मर्यादित क्षण आहे, मर्यादित श्वास नेमून दिलेले तुम्हाला. तर एक एक तो थेंब पडतोय कशावर? त्या पिंडीवर, म्हणजे त्या देवावर. त्यातून काय सुचवलंय की तुझ्या आयुष्यातील प्रत्येक क्षण हा कुणाला अर्पण कर? देवाला अर्पण कर. लिमिटेड आहे. एकदा तो क्षण निघून गेला की परत येणार नाही. हे लक्षात घ्यायचं. आपण किती जगलो यापेक्षा कसे जगलो आणि कुणासाठी जगलो, हे दोन महत्वाचे प्रश्न.